आज से कुछ ही देर में आप रंगे आसमान में 4 चांद लगाने और अपने हवाई करतब से आप सभी का दिल जीतने जल्द ही आपके सामने होगी भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण an inspiring victory. Military bands like the one before you today not only enliven the spirit but also elevate the mood, fostering pride. उन्नीस सौ 1950 में जैसे ही भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत एक गणतंत्र बन गया, आईएफ ने अपना शाही उपसर्ग हटा दिया। इस समय इसके पास कानपुर, पूना, अंबाला और पालम से संचालित होने वाले स्पिटफायर, वेम्पायर और टेम्पेस्ट विमानों के 6 लड़ाकू स्क्वान, एक B-24 बम्बर शख्स स्क्वान, एक C-47 डकोटा ट्रांसपोर्ट स्क्वान और एक AOP फ्लाइट थी। भारतीय वायुसेना ने 1947 में कश्मीर युद्ध, 1962 में भारत चीन युद्ध, 1999 में कारगिल युद्ध में अनगिनत सफल ऑपरेशन किए हैं। युद्ध स्थितियों के अलावा भारतीय वायुसेना ने विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में भी देश की सेवा की है। तेरे पीछे बैठे थे। तो क्या? सफेद रेखाएं सूरज की किरणों की तरह नजर आती हैं और दर्शाती है अपनी पहचान यानी कि सूर्य किरण। जल्द ही इन विमानों को आसमान की ओर ले जाएंगे इस टीम के 9 होनहार पायलट्स। और मैं आपको बता दूं कि सूर्य किरण टीम का हर पायलट 1000 से भी अधिक फ्लाइंग आवर्स का तजुर्बा रखते हैं और ये सभी क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि सूर्य किरण टीम के पायलट्स को आज आप बहुत ही करीब से देख पाएंगे। दर्शकों, किसी भी विमान को धरती से उड़ान भर के आसमान की ओर ले जाना आसान काम नहीं। इस कार्य को सफल बनाने का श्रेय किसी एक या 2 व्यक्तियों को नहीं बल्कि पूरी टीम को जाता है। और आज इन एयरक्राफ्ट को स्विच ऑन करने से टेक ऑफ करने के बीच की सारी क्रिया को आज आप बहुत ही नजदीक से ठीक अपने सामने होते हुए देख पाएंगे। Ladies and gentlemen, get set and keep your gaze right in front towards the aircraft. In a short while from now, you will see 9 pilots of the SuryaKiran aerobatic team head towards their aircraft and prepare for takeoff. For high altitude flight. The formation is called And look right ahead and please welcome the pilots of the SuryaKiran aerobatic team with a huge round of applause. जिन्होंने रात में निकाला
Ladies and gentlemen, please wave towards the pilots as they are waving right back at you, and let's wish them all the very best for today's display. कल क्या खुशी देखा सारे पैर एक साथ And now walking towards the aircraft is number 3 Wing Commander Hutta. Wing Commander Hutta is a Jaguar pilot with more than 2,000 hours of flying experience. Next, walking towards his aircraft is our team leader, Group Captain G.S. Dhillon, who is a Mirage pilot with more than 2,800 hours of flying experience. And now we can see Squadron Leader Ankit Vashish, SuryaKiran 2, who is a MiG-21 Bison pilot with close to 2,000 hours of flying experience. And there goes number 5, Wing Commander Bharadwaj. He is a Jaguar pilot with more than 2,600 hours of flying experience. Following the amphib formation will be the small boy formation, which is 12 o'clock to you now, consisting of AN-32 aircraft in the lead and 2 Dornier aircraft on its side. The AN-32 is from the 49th Con Paraspace, which was raised at Air Force Station Barrackpur with Dakotas in the year 1960. Ladies and gentlemen, now directly above you is the small boy formation.
होकर बहुत जल्द पोजीशन करेंगे एक बहुत ही शानदार एंट्री के लिए। And let me tell you, this is one entrance that you do not want to miss. So I request you all to keep your gaze fixed up in the sky as we wait for the team for its grand entrance. Ambassadors, SuryaKiran aerobatic team led by Group Captain G.S. Miller. Too impressed because he decided to break away from the formation. और ये देखिए टीम के पिछले भाग से ये चला हमारा चंदेल, लेकिन घबराए नहीं, वो जल्दी आप सबसे मिलने आएंगे। दर्शकों की हेलीकॉप्टर फ्लीट ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस who are always ready to take on any challenge, be it rescue operations or combat mission. From your left, here's the team in the याद होगा कि कुछ देर पहले हमारी टीम के एक सदस्य फॉर्मेशन से अलग हो गए थे, लेकिन लगता है वे आप सबसे दूर नहीं रह पाए। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं अपनी बाएं ओर से। From your left, get set to welcome number 7. Flying on the right side of the leader is number 2 squad leader Ankit Vashisht, number 6 wing commander Alok and number 8 squad leader Himanshu। और अब टीम की अगली प्रदर्शन के लिए चलिए हम अपनी नजर ले चलते हैं अपनी दाहिनी ओर, यानी रेलवे स्टेशन की दिशा से आते हुए आप देख पाएंगे हमारे टीम के विमान, और ये तैयार है आपको दिखाने अपना क्लोवर मैनूवर। You will soon see the aircraft pull up towards the sky, and you will also see that while going up, they will change the direction by 90 degrees. Symbol of hope,
कोच और उसी के साथ टीम अब आपकी बाई ओर से आ चुकी है आपको दिखाने अपना बैरल outline the shape of an invisible barrel. Ladies and gentlemen, it's your time to hold on tight to your seats because you are in for a big surprise. And there goes number 7 blazing through the skies at more than 800 kilometers per hour. दर्शकों टीम के अगले मैनूवर के लिए कृपया अपनी नजरें ले चले अपने 12 o'clock यानी अपने ठीक सामने। आपको टीम वहीं से आते हुए दिखाई देगी आपको दिखाने अपना सिग्नेचर मैनूवर और मैं कुछ ही देर में आपको सुनाऊंगी हमारे लीडर की कॉल सीधा उनके कॉकपिट से। सो ऑल राइट स्ट्रेट अहेड 12 o'clock। दोस्तों बीमारों को एक साथ करते हुए लेकिन अब टीम आपके सामने आएगी 2 3 और 5 के समय में आपको दिखाने अपने सिंक्रोनस मैनूवर्स तो कृपया टीम के पहले सिंक्रोनस के लिए अपनी नजर लेकर अपनी बाईं ओर जहाँ पे आते हुए आपको नंबर 6 करने के लिए कड़ी मेहनत और एक दूसरे पे पूरी तरह भरोसा करना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस कठिन परिश्रम और अटूट भरोसे की एक और झलक आपको दिखाने आ रहे हैं हमारे पिछले बॉडी एक और बार आपकी बाईं और दाहिनी ओर से। तो और सबसे
or rock and roll to the tunes of the music. So let's look to your right and get set for the team's synchronous roll maneuver. Here up from the right, are you ready? In 3, 2, 1, here we go! And number 2, 3, 4, and 7 will be rolling out in turns on the leader's command. And this is called the SuryaKiran team's rollback maneuver. So let's welcome the team from the red as यानी कि सिविल टर्नर के ठीक ऊपर से आपको नजर आएंगे तीर को सामने आना और ये है गुमान सिविल टर्नर के ठीक ऊपर आपको दिखाते हुए सूर्यकिरण टीम का इंडिया यूनिटी रोल। और इसके बाद आप तैयार हो जाइए क्योंकि टीम का अगला मैनूवर होने वाला है कि सदैव सर्वोत्तम ऑलवेज द बेस्ट एंड from the left and the DNA aircraft are always kept ready to fly by our technical team, which is led by Vincent Lady, second leader pilot and flight lieutenant. मगर आप देखेंगे कैसे नीचे आते हैं
टीम वहीं से आती हुई नजर आएगी और हम सुनेंगे कैसे लीडर की एक कॉल पर एक और बार आसमान में फैल जाएंगे ये विमान। तो ऑल राइट, स्ट्रेट अहेड एंड लेट्स लिसन आउट फॉर आवर लीडर्स कॉल। अरे आगे देख आगे। Want to meet our audience very closely. तो चलिए अभी मेरे आसमान में घुमाएं और जरा ढूंढ के बताएं कि हमारे नंबर 5 आखिर है कहाँ। Ladies and gentlemen, don't forget to wave out his next pilot and he will also be waving at you. Will also be waiting at you from their cockpit. So all I see right now for one final goodbye. हमारी ऑडियंस को आशा है कि ये शो आपको उतना ही मनोरंजक लगा होगा जितना आनंद हमें इसे आपके सामने प्रदर्शित करके आया है। To keep up with our schedule, you can follow us on Instagram, Facebook, Twitter and YouTube. Our social media handle is SuryaKiran_IAS. And to collect memories of this day, you can visit our souvenir stores which are installed near enclosure 1 and 2. On behalf of the team, I would like to thank Air Commodore Manish J.K. Patel, Vice Sena Medal, Air Officer Commanding Air Force Station Bagdogra, for this wonderful opportunity to perform in the blue sky. Until we meet again, Jai Hind and happy landing. और दर्शकों मैं आपको बता दूं कि कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि सूर्य किरण टीम के पायलट बहुत ही जल्द आप सबसे लेने आने वाले हैं। अच्छा भी हो गया, चौथा भी हो गया, ये पांचवा था, ये वाला पांचवा था, छठा भी लैंड कर, एक लैंड हो गया, पांच आ गया। Ladies and gentlemen, just in the way you have witnessed the team put on drill at the beginning of the show, you will now see the aircraft putting off right in front of you.
And here he has entered the tarmac from your right. After spinning aerobatic display, guys have landed safely and can't wait to meet their audience. Carrying out internal checks of their machine. Come on.